राम 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 सर्वेभ्यः नमस्काराः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा। कुर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा। संस्कृतिं चैव संस्कारं, विन्दते नात्र संशयः। वक्रतुण्ड महाकाय, कोटिसूर्यसमप्रभ। अविघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च हार्दं स्वागतं व्याहरामि गणेश सहस्रनाम समर्पण समारंभार्थम। It is a great fortune that all of us have been a part of this Ganesha sahasranama for a long time now, and we have all joined for the samarpana valedictory function of this yajna we have completed. So the chief guest for today would be Brahmashri Brahmanya Dikshithar Mahodaya. He is on the way. We will welcome him as soon as he is here. I would now request our panelists to please recite a few shlokas as a part of Samarpanam today. Vinayak Mahodaya, you can share this. Manojavarya. प्रारम्भं कर्तुं शक्यते वा? हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम् आश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम् बीजापूरगदाधनुस्त्रिशिखयुक्चक्राब्जभाषोत्पलव्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। गणपतिरुवाच गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिपः एकदंष्ट्रो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदरः लम्बोदरो धूम्रवर्णो विकटो विघ्ननायकः सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजाननः भीमः प्रमोद आमोदः सुरानन्दो मदोत्कटः हेरम्बः शम्बरः शम्भुर्लम्बकर्णो महाबलः नन्दनो लम्पटोभिर्मेघनादो गणञ्जयः विनायको विरूपाक्षो धीरशूरो वरप्रदः महागणपतिर्बुद्धिप्रियः क्षिप्रप्रसादनः रुद्रप्रियो गणाध्यक्ष उमापुत्रो घनाशनः। दीक्षिते हरि ओम। मम ध्वनि श्रूयते वा? स्पष्टः अस्ति ध्वनिः। एकनिमिषम्। ॐ गणञ्जयो गणपतिर्हेरम्बोधरणीधरः महागणपतिर्लक्षप्रदः क्षिप्रप्रसादनः अमोघसिद्धिरमितो मन्त्रश्चिन्तामणिर्निधिः सुमङ्गलो बीजमाशापूरको वरदः शिवः काश्यपो नन्दनो वाचा सिद्धो ढुण्ढिविनायकः मोदकैरभिरत्
सहस्रैकविंशत्या नामभिः पुमान् उपायनं ददेद्भक्त्या मत्प्रसादं चिकीर्षति वत्सरं विघ्नराजोऽस्य तथ्यमिष्टार्थसिद्धये यस्तौति मद्गतमनामदाराधनतत्परः स्तुतो नाम्नां सहस्रेण तेनाहं नात्र संशयः नमो नमः सुरवरपूजिताङ्घ्रये नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने नमो नमो विपुलपदैकसिद्धये नमो नमः करिकलभाननायते इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे ईश्वरगणेशसंवादे गणेशसहस्रनामस्तोत्रं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। हरिः ओम्। राम राम धन्यवादाः। इदानीं वेङ्कटमहोदयान् प्रार्थये अस्माकं मुख्य अतिथिवर्यान् अस्मत्कृते। ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोपाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिवी देवीं वाचमचलयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्धन्वहाना धेनुर्वागस्वानुपसृष्टुतैतु। सर्वेभ्यः अनन्तानन्त नमस्काराः। गुरुवर्येभ्यः विशेष साञ्जलिबद्ध नमस्काराः। येषां स्मरणमात्रेण देवभक्तिः उत ज्ञान कर्म भक्तयः प्रजायन्ते तान् नमामि गुरुश्रेष्ठान् दीक्षितान् मोक्षसिद्धये। अस्माकं गुरुवर्याः किञ्चित् स्वरे कश्चन स्वरे त्रुटयः सन्ति। एवं वा? राम राम। इदानीं सम्यक् श्रूयते वा? एवम्, अधुना स्पष्टता अस्ति। दीक्षितवर्यान् हृत्पूर्वक नमस्कारपूर्वक तेभ्यः स्वागतं व्याहरामः। अस्माकम् आबाल्यादेव गुरवः ते एव अस्मभ्यं गणेशसहस्रनामस्य उपदेशं कृतवन्तः। तेनैव अस्माकं सर्वकार्येषु सर्वत्र विजयप्राप्तिः सिद्धिश्च अस्माभिः सर्वत्र प्राप्ता। गुरुवर्याणां परिचयं तु अतीव क्लेशकार्यमेव, परं किञ्चिदिव विवक्षा अस्ति। तेषाम् उपाधयः तु एवं सन्ति येन ज्ञातुं शक्यते तेषां साधना कियदस्ति इति। भागवतभूषण, सरसभाषी, उपन्यासरत्नाकर, सप्ताह साम्राट्, कलियुग शुकब्रह्म इत्यादयः बिरुदाः सन्ति। तत्र विशेष उपाधिस्तु ब्रह्मश्री अनन्तराम दीक्षितानां शिष्याः येते, ब्रह्मश्री कृष्णमूर्ति दीक्षितानां सत्पुत्राः येते। ते सोमयाजिनः एवं वेदविद्या यजन श्रौतादि विद्या संपन्नाः। अन्ते तत्र पश्यामश्चेत् विशेष श्रीविद्योपासकाः अपि दैवज्ञाः अपि। एवं तत्र आचार्यैः शंकराचार्यैः यदुक्तं शिष्यहिताय सततम् उद्यतः सकल तत्त्ववित् च यः अस्ति सः एव गुरुः इति यल्लक्षणं दत्तं, तादृश गुरुवर्याः अत्यन्तं विरलाः। तादृशाः एते अस्माकं श्री दीक्षितवर्याः। तत्र संस्कृत तमिळ् भाषयोः अपि प्रकाण्डं पाण्डित्यं सम्पाद्य एते पुराण इतिहास आधारेण तत्रापि वैदिक धर्म सनातन धर्म आधारेणैव
सहस्रशः उपन्यासाः ते आभारतं बहुधा बहुत्र बहुकालेषु एतैः विहिताः सन्ति। विशेषतया वयं पश्यामश्चेत् साधारणतया केवलं शिष्यान् प्रबोधयन्ति प्रेरयन्ति गुरवः। एते तु विशेष मणयः एते इत्युक्ते शिष्यं सपरिवारं सकुटुम्बं प्रेरयन्ति एते। यदा एते शिष्यस्वीकारं कुर्वन्ति पूर्णमपि कुटुम्बं सपरिवार जनान् सर्वान् अपि स्वाश्रये स्वीकृत्य सर्वान् अपि सनातन धर्मे ते उद्बोधयन्ति प्रेरयन्ति मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। तादृश विशेष कार्यं वर्तते। तत्रापि न केवलं वाक्य उपन्यासैः परं क्षेत्रं नीत्वा विशेषतया अयोध्या क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं हरिद्वार गुरुवायूर गुणशीलम् इत्यादि श्रीरंगम् इत्यादि शुकस्थलम् इत्यादि बहुषु क्षेत्रेषु ते उपन्यासादिकं रामायण नवाहं भागवत सप्ताहं देवी भागवत नवाहम् इत्यादि नारायणीय पारायणादिकम् एवं तत्र बहु सत्संग कार्याणां रचनेन सर्वानपि कुटुंबजनान् प्रेरयन्ति। सन्मार्गे वैदिक सनातन मार्गे सर्वदा उद्बोधयन्ति। एवं तेषां वैशिष्ट्यं वर्तते। तादृश गुरुभ्यः वयं पौनःपुन्येन नमस्कार रूप कृतज्ञतामपि समर्प्य किञ्चित् वक्तुं प्रार्थयामः आशीर्वचन रूपेण। विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। विशेषतः गणेश सहस्रनाम ஸ்தோத்திரத்துக்கு தனித்தன்மையோடு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா தெய்வத்திற்கும் சஹஸ்ரநாமங்கள் இருந்த போதிலும் அவைகளில் பாராயணத்திற்கு யார் யாருக்கு அதிகாரம், யார் யார் ஈடுபடலாம் என்பதில் கேள்விகள் உண்டு, ஏற்பவர்கள் உண்டு, அதில் ஆட்சேபம் தெரிவிப்பவர்களும் உண்டு. மீதி சஹஸ்ரநாமங்களில் அது போன்ற விவாதம் உண்டு. ஸ்ரீ கணேச சஹஸ்ரநாமத்தில் ஸ்ரீ சூத்ர பதிதை ரபி இத்தபி சஹஸ்ரநாமத்திலேயே இருக்கிறது. அதனால் அனைவருக்கும் அதிகாரம் உள்ள ஒரு சஹஸ்ரநாமம் ஸ்ரீ கணேச சஹஸ்ரநாமம். எல்லா தெய்வத்திற்கும் மேல்பட்ட தெய்வம் ஸ்ரீ கணபதி. சில வாக்கியங்களுக்கு நமக்கு அர்த்தம் புரிவது, ஆழ்ந்த அர்த்தம் பார்ப்பது என்பது சிலருக்கு மட்டுமே உண்டு. தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள், எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவனாவான் என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. பொதுவாக இதற்கு எழுத்து அறிவித்தவன் என்றால் நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள், ஆச்சாரியர்கள், அவர்கள் பகவானுக்கு சமானமானவர்கள் என்று மேலெழுந்த வாரியாக பொருள் சொல்லப்படும். ஆனால் அதில் வார்த்தையை கவனிக்கும் போது அதில் ஆழ்ந்த பொருள் இருப்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். எழுத்தை சொல்லிக் கொடுத்தவன் என்று சொல்லவில்லை, எழுத்தை அறிவித்தவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த அறிவித்தவன் என்கிற சொல் மூலமாய் என்ன புலப்படுகிறது? அறிவிப்பு என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்? அதற்கு முன்னாமல் தெரியாமல் இருந்து முதல் அதை தெரியப்படுத்துவதற்கு அறிவிப்பு என்பது பொருள். அதுபோல் எழுத்தை அறிவித்தவன் என்று சொன்னால் அதற்கு முன்னால் எழுத்து இல்லாமல் இருந்து முதல் எழுத்துக்களை அறிவித்தவன் என்று பொருள். இது மகா கணபதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும். வியாசாச்சாரியால் மகாபாரதம் சொன்ன போது எழுத ஆரம்பித்து எழுத்துக்கள் என்று உண்டு என்பதை உலகத்திற்கு முதல் அறிவித்தவர் கணபதி. எழுத்தை அறிவித்தவன் இறைவனாவான் என்று சொன்னால்
எழுத்துக்களை முதல் அறிமுகப்படுத்தினாரே அவர்தான் இறைவன், எல்லா தெய்வத்திற்கும் மேல்பட்டவன் என்ற பொருளில் அந்த சொல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேல் சில சோத்திரங்கள், பாராயணங்கள் சில லாபங்களுக்கு மட்டுமே உபயோகப்படுத்தலாம் என்பது அதிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஆனால் கணேச சஹஸ்ரநாமம் தர்மார்த்த காமமோக்ஷானாம் இதமேகமி சாதனம் என்கிறது. நம்முடைய எண்ணங்கள் எதுவா இருந்தாலும் இந்த 4 பிரிவுக்குள் தான் இருக்கும். தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம். இந்த 4ல் எதுவா இருந்தாலும் கணேச சஹஸ்ரநாமம் மூலம் அடைய முடியும். தர்மார்த்த காமமோக்ஷானாம் இதமேகமி சாதனம். எதுவா இருந்தாலும் கணேச சஹஸ்ரநாமத்தின் மூலமாக அடைய முடியும் என்பது ஸ்ரீ கணேச சஹஸ்ரநாமி சொல்லிக் கொடுக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமது முன்னோர்கள் பழமொழி சொன்னால் அதற்குள் உள்ளர்த்தம் ஒன்று இருக்கும். பொதுவாக உலக நடைமுறையில் கம்முனிரு காரியமாகும் என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்வார்கள். கம்முனிரு காரியமாகும் சொன்னா பேசாம தூங்கின்று காரியம் நடக்கும் என்பது பொருள் அல்ல. கம்முனிரு காரியமாகும் சொன்னா கணபதி மந்திரத்தில் கம் என்கிற பீஜாட்சரம் மிக முக்கியமானது. கணபதியை பிடிச்சுக்கொள் காரியமாகும் என்பது மட்டுமே அந்த சொல்லின் முக்கியமான பொருள். கம்முனிரு என்று சொன்னால் கணபதியை பிடித்துக்கொள் காரியமாகும் என்பதே அந்த வாக்கியத்தின் விளக்கமாகும். கணேச சஹஸ்ரநாமம் சகல க்ஷேமங்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடியதான தகுதி உள்ளது. யார் வேண்டுமானாலும் பாராயணம் பண்ணக்கூடிய தகுதி. தர்மார்த்த காமமோக்ஷானாம் கணேச தியானத்தில் கராகிரத மாணிக்க கும்பவக்ர வினிர்கதை ரத்னவரிஷை பிரேணயந்தம் சாதகான் மதவிகலம் என்று தியான ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. கணபதியின் கையில் ஒரு கலசம் இருக்கும். சிங்கேரி பீடாதிபதிக்கு அந்த கணபதி தான் உபாசனா மூர்த்தி. அவர்கள் ஆராதிக்கும் கணபதியை பார்க்கும் பொழுது கணபதியுடைய கையில் ஒரு கும்பம் இருக்கும். அந்த கராகிரத மாணிக்க கும்பவக்ர வினிர்கதை அதில் ரத்னங்கள் நிரம்பி இருப்பதாகவும் கணபதியை ஆராதிக்கிறவர்களை அந்த ரத்னத்தை கொண்டு திருப்திப்படுத்துகிறான். கராகிரத மாணிக்க கும்பவக்ர வினிர்கதை ரத்ன வருஷை பிரீணயந்தம். நிறைய ரத்னங்களை அந்த கும்பத்திலிருந்து கலசத்திலிருந்து அள்ளி தருகிறான் என்று கணேச சஹஸ்ரநாமம் துவங்கும் போதே சொல்லப்படுகிறது. ஐஸ்வர்ய சமிருத்திக்கு கணபதி மிகவும் எடுத்தவன். அதனால்தான் ஆச்சாரியால் விதத்தாம்சியம் காபி கல்யாணமூர்த்தி என்று கணபதி ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கிறவன் என்று ஆச்சாரியால் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆச்சாரியால் மட்டுமல்ல, போதராஜனும் அப்படியே கணபதியை சொல்லும் போது நிதராம் இதரானபேட்சம் என்று குறிப்பிடுகிறான். எல்லை இல்லாத ஐஸ்வர்யத்தை கொடுப்பவன் கணபதி. அதோடு மட்டுமில்லை, இதரானபேட்சம் அவன்கிட்ட பிரார்த்திக்க விட்டு இன்னொரு தெய்வத்திட்ட போய் பிரார்த்திக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது என்று போதன் இதரானபேட்சம் கணபதியை ஆராதிக்க விட்டு மீதி தெய்வங்கள் அவர்களிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டிய தேவையே இருக்காது என்று போதன் தன்னுடைய ராமாயணத்தில் குறிப்பிடுகிறான். அப்படி அனைவராலும் உபாசிக்கப்படக்கூடிய மூர்த்தி ஸ்ரீ கணேசன். கராகிரத கீழே சொன்னேனே, கையில் மாணிக்கம் வச்சுக்கொண்டு மாணிக்க கும்பம் வைத்துட்டு இருக்கான். அதன் மூலமாக ரத்னங்களை கொடுக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது இதில் சாதாரண ஜனங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். இப்படிதான் வச்சிருக்கான் வலது பக்கமாய், அதுல கும்பங்கள் இருக்குன்னு சொன்னா அப்படி சாட்சி கொடுக்கிற போது பிதிர் மார்க்கம் இருக்கே, அந்த மார்க்கத்தால் தான் கொடுக்கிறானா என்றும் ஒரு சந்தேகம் வரும். ஆழ்ந்து அதை பார்க்கும் போதுதான் தெரியும். யானைகள் இப்படி தராது, இப்படி தூக்கிதான் தரும். அதனால் தேவதீர்த்தத்தால் தான் தருகிறான் என்பதை பெரியவர்கள் வியாக்கியானம் பண்ணுவார்கள். அந்த கணேச சஹஸ்ரநாமம் மிக முக்கியமானது. யார் வேண்டுமானாலும் பாராயணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு
சாஸ்திராமத்திலே சொல்லப்பட்டு ஆயுஷ்யம் பீதரோகம்னு ஆரம்பிச்சு ஈலோகங்களுக்குள்ள க்ஷேமங்கள் ஆரோக்கியாதிகள் பரலோகத்துக்கு வேண்டிய மங்களங்கள் அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது கணேச சாஸ்திராமம். அதை பிரதானமாக வைத்து நமது இதை நடத்தும் சமஸ்கிருத கமிட்டி இந்தியா முழுவதும் மட்டுமல்ல உலகத்திற்கு முழுவதுமே சமஸ்கிருத பாடங்கள் எடுத்து அனைவரையும் வைதிகமான மார்க்கத்தில் திருப்பி வெறும் மொழி பாஷா ஞானம் மட்டும் இல்லாமல் அதன் மூலமாக ஆராதிக்கப்பட வேண்டிய தெய்வங்கள் ஆச்சாராதி நியமங்கள் அந்த சமஸ்கிருத பாஷையில் கிரந்தங்களில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வளவு நியமங்களிலும் ஈடுபாடு வரும்படியான முறையில் இந்த கமிட்டி செயல்பட்டு வருவது மிக மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதில் ஈடுபட்டு பிரதானமாக இருந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் அனைவருக்கும் ஆயுஷ்யம் பீத ரோகம், ரோகமில்லாத ஆயுஷ் என்று சொல்லப்படுகிறது கணேச சாஸ்திராமத்தில். அதுபோல் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் தீர்க்கமான ஆயுஷோடையும் ஆரோக்கியத்தோடையும் இருந்து கொண்டு தொடர்ந்து இந்த கமிட்டி பல சத்தர்மங்களை நடத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். அதற்கு கணபதி அனுகிரகிக்கட்டும் என்று பிரார்த்தித்து என்னுடைய இந்த சின்ன உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு உள்ளவர்கள் இதனை நிர்வகித்து நடத்துகிறார்களே அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 20 வருடத்திற்கும் மேற்பட்டு என்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு உட்பட்டவர்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆசீர்வாதங்கள் என்று தெரிவித்து இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நம பார்வதி பதையே. ஹரே ராம் ஹரே ராம். सर्वेभ्यः नमस्काराः. गुरुवर्यैः आशीर्वचनं यद्दत्तं तस्य आङ्ग्लानुवादं करणीयमिति कैश्चित् प्रार्थितम्. एकवारम् आङ्ग्लभाषया अपि अनुमोदनं कुर्मः. विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः. நிறைய பேர் இங்க தமிழ் இல்லாததுக்காக ஒரு தினம் ஆங்கில பாஷையில ஒரு அனுவாதம் கேட்டிருக்கா. அதை இப்ப சொன்ன இந்த 5-6 பாயிண்ட் அப்படியே ஒரு தினம் ஆங்கில பாஷையில அவளுக்காக உங்க அனுகியோட சொல்றேன். நான் அவள் प्रथमतया the first thing what our Guruji has told us, Adhikari Vedah. The first conversation always when we take up any grantha is who is the Adhikari. For many Sahasranamams, lot of Adhikari questions have been raised. Many akshepas have also been told. Nashwete. In many of these granthas, Sahasranama granthas, the adhikaris have always been questioned. Who are the adhikaris who can take the Sahasranama grantha? There are a lot of questions and other akshepas also raised. But only in Ganesha sahasranama we see that Stri Shudrihi Patitairapi, that is everybody in this world, all who have this Vak Shakti, who are the human beings who are all there, everybody can actually experience this Ganesha sahasranama. So that is one of the greatest entry point what we can see from an adhikaritvam. That was the first point which our Guruji has shared. Second is Ganesha Adya Devaha. So whenever, especially in Tamil, there is a small proverb. It says, Ezhuthu Arivittavan Iraivan Ahuvan. One who actually teaches us the letters, he becomes God. So a normal translation or a meaning what we get is, we say that one who has taught us letters becomes God. The other deeper meaning, when we think about it from a point of Ganesha sahasranamam, we get to know that the letters
writing letters, this whole practice itself was started by Mahaganapati, especially when he started when Vyasa Bhagavan told the Vyasa Mahabharatam, and Ganesha started writing these into a letter form, as a lekhana form. That is when letters actually came into force. So actually, when we say எழுத்துகளை அறிவித்தவன், he is the one who started the practice of writing and the practice of letters being in the written form. So therefore, Ganesha also becomes the Adya Devata for letters and writing. That was the very interesting. Even in Sahasranama, we have Ashtadasha Lipivyashti Samashti Jnana Kovidaha. This is what earlier Guruji had also told us. So like this about the letters, that was a very interesting point. The third point which was made was Prayojanam. In some Sahasranama, you have some Prayojanam, some Siddhis you get, some Roga Nivaranam, Karya Siddhi, like this. But in Ganesha Sahasranamam, when we see the Parashruti, Dharmartha Kama Mokshanam, Idam Ekam Hi Sadhanam. Ekam, Idam, Ekam Hi Sadhanam. So this becomes a single sadhana to which you can get all the four: Dharma, Artha, Kama, Moksha. So anything in this world we want will get classified under one of these four only. And if we want one single tool, so in today's world, when people always say, give us something, one thing which can give everything, alpayasena, alpayasa sadhyam, analpa phalam. Like this, if we want, that is what people keep asking us. So for that, if there is one answer which can solve everything, that is Ganesha sahasranamam. This was the third point which our Guravaha has told. The fourth point was very interesting point again. In Tamil, when somebody says this is not happening, that is not happening, people get very worried and stressed. They say, Gammana iru karyamahum. Just be, gum, be just silently. Everything will happen. That is what people think it is. But when we think about it, Gam is the Aksharam or the Bijaksharam for Mahaganapati. And through Ganapati Upasana, when you catch Ganapati, what happens is Gammana hold Ganapati, Ellame Karyamahum. All your Karyam work gets done. That is what is again a very what our elders keep telling. Gammana Karyamahum. So that Gam actually denotes the Ganapati Upasana Marga, which we have to all hold. And that Ganapati Upasana, how it happens? Through Ganesha sahasranamam only. Moola mantradapi etat stotram mama priyakaram iti uktam kila. Tarhi, this Ganesha sahasranamam becomes the tool for Ganapati Upasana, through which all our karya can be sadhana. The fifth point we said is Sakala Kshema Pradaha Ganesha sahasranamam. For example, if we just take the Dhyana Shloka, which talks about Karagradhitra Manikya Kumbha Vakta Vinirgataihi Ratnavarishaiv Prinayantam Sadhakan Madavihvalam. That is the Dhyana Shloka. So, anybody who wants any type of Aishwaryam, any type of Siddhi, whatever, he has the Karagradhita Manikya Kumbha Vakta Vinirgataihi. He has a, at the Karagra, there is a Manikya Kumbha which is holding. And whenever this bhakta comes to him, he does not give one by one Ratna. Ratna Varshaiv Prinayantam. He gives the Ratna Varsha, the shower of Ratna is given to him. So, Aishwarya Samriddhaye, for that we have to do Ganapati Upasana only. And this is also confirmed by Adi Shankara Bhagavat Padacharyaha when he says, Vidhattam Shriyam Kapi Kalyana Murtihi. Not only Shankaracharya, Bhoja Maharaja also says in his shloka Lakshmi Tanotu Nitaram Itaran Apeksham, he says Nitaram Itaran Apeksham. What does that mean? That is, Ganapati is the single point of contact and also the destination. So Itaran Apeksham, one it means unlimited you get, the other it means you need not go to any other place for requesting or asking. So like in Raghuvamsha Vadanyaha, we say, for the Raghu Rajas and all, you need not go to any other place. That is what in Varatantu also we see. Like that, in Devatas, Ganesha
is one person. When we go to one person, everything vidattam shriyam kapi kalyana murti. Within this, our Dikshata Mahodaya in his Upanyasa also you can see, he will always create that Purva Paksha and also solve the answer to us. What all probable doubts we will get, he will think about it and try to solve it. That is the very speciality in his Upanyasam, which you will realize only when you listen to it actually. Like that today also what he told in this thing, when if you hold the Kumbha like this, and if you have to do a Varsha, it may come like this. In the Pitramargavat Drishyate, it appears as if, so is he giving like this? In the Pitramarga, if somebody asks, it is solved how it, because whenever an elephant gives something, it lifts its trunk and gives it like this. So therefore, even while giving that Ratna Varsha, it is through the Devata Marga only, and not like this as a Pitra Marga. Is one more doubt which, if it comes, gets clarified by the Guru's Ashirvachanam. Finally, he also says it is Iha Para Mangalam, everything Iha Loka Paraloka. Whatever we need, everything can be achieved only through one sadhana margam, which is Ganesha sahasranama. And finally, lot of blessings for all of us, for the Chhatraha, for the Shikshakaha, for the panelists, for the Ayojakaha, for everybody who is in this Samskrita Bhasha Kshetram, and for who are those who are supporting this organization in Pratyaksha Rupena, Paroksha Rupena. He gave lot of blessings because he says Bhasha Jnanam is being given, not only Bhasha Jnanam, but through that the Vaidika Margam, the Vaidika Acharaha, the Devata Upasana, the Samskrita Samskriti Samskara which is there, all of these are being shared and disseminated through these margas, which gives lot of benefits to entire humankind, entire mankind, the Kotishaha people who are there. For everybody, benefits are being given unconditionally. So lot of blessings, Ayushyam Vitarogam, that is the blessings which he gave. And let all of you do lots of more work for a longer time. And let this always be Shashvata Rupena. Let this Karya continue. These are some of the blessings and the Yathaditam Yathamati translation of what our Guravaha actually told now. நீங்க சொன்னதை அப்படியே தெரிஞ்ச வரலையும் அனுவாதம் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷம், ஆசீர்வாதம், க்ஷேமா இருக்கணும். அந்த விநாயகர் பாட சொல்லி கொடுத்தார். வெங்கடண்ணா கேட்கல. விநாயக ரஜத் அடுத்து வெங்கடண்ணா மத்தியத்துல வந்து பேசுங்க. விநாயக ரஜத்துங்கிறவர் தான், விநாயக ரஜத்துங்கிறவர் வியாக்கரண வித்வான், ஜோதிஷ் சாஸ்திர வித்வான். அவர் தான் வந்து இந்த கோர்ஸை நடத்தினார். ஒரு 30 கிளாஸ் ஏதோ நடத்திருக்கார். நடத்தி எல்லாருக்கும் அந்த பதச்சேதம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இந்த கணேச சஹஸ்ரநாமத்தை அவர் உபாசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு 30 வருஷமா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 30 வருஷமா அவர் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. பிறந்ததுல இருந்தே விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு அவர் பிறந்தார். அதனால்தான் அவருக்கு விநாயகன் பேரு. அவர் தான் அதுக்கு சிக்ஷகர். நம்ம மனோஜ்ங்கிறவர் வந்து மனோஜ் ராஜாராவ், அவர் வந்து பேனலிஸ்ட்னா அவர் சிக்ஷகர் பாடம் சொல்லி கொடுத்தோன்னையும் இவர் வந்து திருப்பியும் அதை 2 தடவை சொல்லுவார் மனோஜ்ங்கிறவர். அப்புறம் அவர் வந்து அவரும் கணபதி உபாசகர், நம்ம மாத்துக்கிட்ட இருக்கார். இங்க தீக்ஷிதான்னு ஒரு பொண்ணு, அவரும் வியாக்கரணம் படிச்சுட்டு இருக்கா, MA சான்ஸ்கிரிட் படிச்சுட்டு இருக்கா. அவளும் வந்து இந்த சஹஸ்ரநாமத்தை வந்து அனுச்சாரணம் பண்ணி இந்த ஒரு கோர்ஸை, இதை வந்து ஒரு கோர்ஸா இதை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு கல்வி மார்க்கம், அதை இதை பண்ணிருக்காவா. இதுக்கப்புறம் பரீட்சை நடக்கும். இதுக்கப்புறம் இந்த கணேச சஹஸ்ரநாமத்தை சரியா சொன்னாலா, அவ பாராயணம் பண்றாளாங்கிறதுக்கு ஒரு பரீட்சை நடக்கும். அந்த பரீட்சையெல்லாம் நாங்க சேர்ந்து நடத்துவோம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஒரு பிரமாண பத்திரம் கொடுப்போம். இவ்வளவு வந்து உங்க ஆசீர்வாதத்தினால, உங்களோட பிரேரணையாலதான் இந்த கணேச சஹஸ்ரநாமத்தை எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அதனால அனந்தானந்த தன்யவாதாக, நமஸ்காராக. மகான் பிரமோதா, மகான் பிரமோதா, மகான் சன்ஸ்கிருதம்.
मंगलानि भवन्तु पाकरम् சரி சரி லாக் அவுட் பண்ணிடலாமா சீனிவாசன்? राम राम राम। अहो भाग्यम् अस्माकं यत् वयम् एतादृश सत्सङ्गे आगताः इति अद्य इदानीम् औपचारिकरीत्या किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, तत् वयं पश्यामः। यत्किमपि वक्तुम् इच्छा अस्ति वा वेङ्कटमहोदय? Now let us see the course statistics or course analytics. What did we do for so many days? I will be sharing the screen. वक्तुम् इच्छा इत्युक्ते तत्र विनायकरजतवर्याय अनन्तानन्त धन्यवादान् समर्पयितुम् इच्छामि। यतोहि अस्माकं पञ्चवर्ष स्वप्नः एतादृश गणेशसहस्रनाम तत्र कार्यशाला वा कोर्स् वा करणीयम् इति, तत्र तैरेव करणीयम् इति मम आशा। यतोहि ते गणपति उपासकाः श्रद्धया आचरन्ति, अग्रे अपि एतस्यैव अर्थविवरणमपि तैरेव करणीयम् इति प्रार्थये। विनायकरजतमहोदयः वयं सर्वे इदानीं गणेश उत्सवः अपि आगच्छति। गणेश उत्सव सन्दर्भे वयं सर्वे पारायणं कुर्मः। भवद्भिः बोधित गणेश सहस्रनाम पारायणं वयं सर्वे कुर्मः। अन्यच्च एतस्य अर्थविवरणमपि अस्मिन् वर्षे वा अग्रिमवर्षे वा यदा भवतां समयः भविष्यति कृपया तदपि बोधयन्तु अस्मान्। गणेश प्रसादस्य पात्रभाजां कुर्वन्तु अस्मान् इति सम्प्रार्थ्य पुनः पुनः धन्यवादान् समर्प्य कार्तज्ञं निवेदयामि। धन्यवादाः विनायकरजतमहोदयः, धन्यवादाः। मनोजवर्याय अपि भवन्तः यद्यपि भानुवासरे भवतां कक्षा अस्ति तथापि भवन्तः पैनलिस्ट् रूपेण आगत्य भवान् अत्र अस्य कोर्स् विषये साफल्यं दत्तवान्। दीक्षितामपि दीक्षितायै अपि धन्यवादान् समर्पयामि सर्वेभ्यः। वस्तुतः यदि गणपतिः न इच्छति चेत् किमपि न सेत्स्यति। एतत् सर्वं तस्य बहोः कालात् आसीत् चिन्तनं, कथञ्चित् गणपति सेवा काचित् कर्तव्या इति। परन्तु तत् यावत् सः स्वयं न आकर्षति तत् कार्यं न सेत्स्यति। तस्य इच्छा तथा आसीत् यत् अहं कुर्यामिति। सः तथा भवन्तौ योजितवान्, मम मुखात् कारितवान्। अहं स्मरामि विश्वनाथवर्यः आदौ एकवारम् उक्तवान्, रेकार्ड् कृत्वा प्रेषयतु इति। तदादौ सः गणपतिः तथा प्रेरितवान्, ततः परं कक्ष्यारूपेण प्रेरितवान्। मम सौभाग्यं तदुच्यते खलु, गणपतिः साक्षात् दर्शनं न ददाति, कदाचित् विविधैः रूपैः आगत्य दर्शनं ददाति। मद्विषये तु सः कदाचित् विश्वनाथरूपेण, कदाचित् वेङ्कटरूपेण, कदाचित् अद्य दीक्षितावर्याणां रूपेण एवं दर्शनं यच्छन्नेव अस्ति। मम सौभाग्यं तादृशमस्ति। महान् प्रमोदः। अहं तत्र भाग्यवान्। महोदय, एवमेव तत्र कथम् आसीत् एतत् कक्षा भवतां कृते इति एकवारं वदतु इति प्रार्थये। वस्तुतः यावत् स्वयं भक्तिर्न उत्पद्यते जनाः प्रेरिताः न भवन्ति। अस्मिन् विषये मया दृष्टं नूनं 80-200 जनाः तत्र भक्त्या प्रेरिताः अधिकारिणः सञ्जाताः। अधिकारी स एव भवति यस्मिन् भक्तिर्भवति। यद्यपि स्त्रीशूद्रपतिताः अपि यावत् भक्तिर्नास्ति तावत् तेपि अधिकारिणः न भवन्ति। तेषु सा भक्तिरुत्पद्यते, मया किञ्चित् प्राप्तव्यं भगवता, तदा ते प्रविशन्ति। एवं तादृशाः अत्र यदा कक्षा समारब्धा मम इयं चिन्ता आसीत् कथम् एषा कक्षा चालनीया इति। मम अनुभवः नास्ति, अहं सर्वदा शास्त्रपाठने एव आसम्।
तादृशी कक्षा मया चालनीया इति वेङ्कटवर्यैः यदा उक्तं तदा ममापि दिग्भ्रान्तिरासीत् कथं चालयेयम् इति। अस्तु परन्तु एषा कक्षा मदपेक्षया अधिकभक्तैः चालिता इत्येव वक्तव्यम्। ते कथं चालनीयमिति मध्ये मध्ये तैरेव सजेशन्स् इत्युच्यते खलु तद् मध्ये मध्ये तैः दीयमानमासीत्। महोदय किञ्चित् मन्दं चालयति वा अस्माभिः नावगम्यते, किञ्चित् अस्य विच्छेदं कृत्वा दर्शयति। तदा एवं क्रियते चेत् एतेषां लाभः भवति इति मया तदा अवगम्यते स्म। अतः तेन मार्गेण लक्ष्मणमहोदय अपि मध्ये मध्ये वदति स्म, महोदय एवं क्रियते चेत् कदाचित् प्रयोजनं स्यात् इति। एवम् एतादृशं मनोजवर्यः दीक्षितः तेषां तु साहाय्यं बहु अधिकं लब्धं मया मनोजवर्यस्य दीक्षितायाश्च। कदाचित् अहं विस्मरामि चेदपि ते स्मृत्वा कक्षां एकवारम् एवं सञ्जातम्। एकवारम् अहं विस्मृतवान् कक्षा अस्ति, कार्यान्तरेषु व्यापृतः, मनोजवर्यः कक्षां प्रविश्य कक्षां चालितवान्। अहं स्मरामि तद्दिनं। गतसप्ताहे आरोग्यं सम्यक् नासीत्, मनोजवर्यः नीतवान् कक्षां, सः सञ्चालितवान्। एवं वस्तुतः गणेशः सर्वान् एकत्रीकृत्य एतत् स्वकीयं सहस्रनामस्तोत्र अध्यापनस्य कार्यक्रमं सः सञ्चालितवान्। निमित्तमात्राः वयं सर्वेभ्यः स्मः। धन्यवादाः पुनः अपि सर्वेभ्यः। छात्रेभ्यः विशेषतः ये तत्र पार्टिसिपेशन् आगताः ते वस्तुतः धन्यवादार्हाः। वयं सर्वे तु तत् उच्यते खलु, we are just felicitators. We were just trying to arrange something that people can learn, but it were they who actually showed interest, and they were asking questions in such a way that even before coming to class, initially what we see when we teach Sahasranama Stotra and such stotras, we just come and Uchcharanam Janimaha. So let us sit in the class and do Uchcharana. Finish, done, khatam, come. But these students are these participants were asking the questions in such a way that I had to come prepared before the class. I had to see what slokas I am going to teach today, what could be the meaning of this, how this vigraha could happen, what type of vyakarana I may have to speak here. So that type of preparation they made me do. So that actually made the classes very interesting. I would like to extend my special thanks to all the participants. And as Venkatji and even participants were requesting, we will soon come up with the course on the Vyakhyana of this Ganesha sahasranama stotra. Let Ganapati take this charge. This is his responsibility. Let us leave it to him. Dhanyawadaha. धन्यवादाः महोदय। पुनः पुनः नमः प्रस्तादत पृष्ठतस्ते इति नमः सुमाञ्जलिं वयं दद्मः, वयं समर्पयामः। इदानीं course statistics वयं पश्यामः। So we had as the beautiful number of Ganapati, we had 21 sessions of class. There is a 19.5 hours of interactive sessions which have happened, and the total registrants for today as on day is 298 people. Also, we have had about 30 people attending on a daily basis, which here says 29, so almost about 30 people every single weekend, that is on Saturdays and Sundays. These classes have happened. So there are about 30 people. We have had a very nice gradual increase in the registration also in this course. Now, speaking about assessment, as Anna told, we are going to surely look at how well you have learned this. So we will have a memorization and a parayanam, that is recitation test for all of you. It will be either in the second or the first weekend of September. The further details will be forwarded to all of you through email. So request all of you to please practice Ganesha sahasranama well and do the memorization part rather than the parayanam. Parayanam has anyway happened for so many days. Request all of you to please do the memorization of this. Before we go to the humble seva, I would again and again like to
thank every single person who has been a part of this great journey. It is not enough for us to show our gratitude through words. So, mainly the teacher, the panelists, all the other people who have supported us for this. Dhanyavadaha sarvebhyah sarvabhyascha. You will be able to see that there are 3 websites which we have, and any information regarding the courses, regarding our company, and the products which we have can be gained through these 3 websites. These are some seva metrics which we have till date. We have about 18 self-learning products, and you can see it on your own that thanks to the effort of a lot of people, day in and day out, morning, evening, night, say at what time of the day, even the 24 clock of the world, not even just India, not in just IST time, always this is happening only because of the learners' support, the volunteer support, the people who are working in the office. Because of them, we were able to achieve all of this. How do we continue all of this? It is possible through only the participants who come here. So we request all of you to just spend at least 30 minutes on a daily basis for learning Sanskritam. Please spread the word that there are such wonderful classes which are happening. Dikshitar Mahodaya beautifully told that not only just Sanskritam, not Bhasha Dhyanam is happening here. The Samskara is being given. The reason because of which we should study Bhasha is being given to all of us. So let us make sure that we take the maximum amount of opportunity out of this and gain a lot of punya in our life, because it is coming to our doorstep, actually at our fingertips, not even at our doorstep. So let us make a lot of efforts to learn this and also spread the word through all of this. There are many other ways in which you can support us. We are all gaining a lot of support through all of you. We are also very, very grateful that all of you are doing such supports. You may also continue doing these supports to us. Without your help, we will not be able to pull this great ratha. So again and again, I would like to show my gratitude to all of you. Dhanyavadaha sarvebhyah sarvabhyascha. Please feel free to contact us. लक्ष्मणवर्य मम धन्यवादान् माहेश्वर्यै अपि सूचयन्तु। पुनः अन्ये व्योम्नि सन्ति, सर्वेभ्यः अपि मम कृतज्ञताः सूचयन्तु। तर्हि बहु सुन्दरं पीपीटी निर्मितमासीत्। अवश्यं महोदय, धन्यवादाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। इदानीं कथम् आसीत् कक्ष्या इति छात्राणां मुखात् वयं शृणुमः इति आशा अस्ति. We would like to take the feedback and the experience you had in this journey. So I request the participants to raise your hands. I will allow you to speak. We request you to please raise your hands and speak. I would first like to ask Manoj Varya and Dikshita Mahodaya to speak, and later we will go to the participants. Manoj Varya. Ram Ram. इदानीं तु सर्वेभ्यः वार्तालापं कृतवन्तः ते. They have already shared the experiences of the main special thanks to in fact I did not know about the course which is going on. Venkat sir called me and told me, Manoj, you have to take up this. It has been a long-term dream for me to really icha asit ekavaram Ganapati sahasranama, so I'll have to learn and things like that. But thanks to the special thanks to our Vyoma brothers, Venkat sir and Vishwanath sir, and next our Acharya Vinayak Mahodaya. So we had
committed a lot of mistakes. In spite of a lot of mistakes I had committed, he said, "Okay, don't worry, we will go," and things like that. So thank you so much, for having that patience, to really correct us and teach us. Thank you so much, and I also thank my co-panelist Deekshita Bhagini. She is also was very helpful, and all the participants who really was there, with us for this long journey. It was really the short, long story short. I just wanted to say that it was a real big dream, which has really, it was a big thing, which has really, it's today has come true. Thank you so much for all the support. In fact, as I told you, Acharya was really very, very, good enough and patient enough to really teach us. Thank you so much. Ram 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 Mahodaya. Deekshita Bhagini. हरि ओम् श्रूयते वा किञ्चित् अत्र समस्या वर्तते भवतु नाम श्रूयते प्रति वदतु हरि ओम् राम 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 वक्तुं शक्यते श्रूयते दीक्षिते yes so I remember the day Vinayak sir called me and he asked if I can be part of this. So I was very happy to get associated with sir. He was my teacher in my university. So I was very happy, and it was a very nice experience. And as Manoj Vari already said, we had committed a lot of mistakes, but sir, he was so patient with us, and very lovingly, very compassionately, he helped us through it. And I got very benefited because it was a responsibility for me, and hence I was very committed to it. Otherwise, I don't know if I would be this committed to it. So thank you so much, sir, and thank you so much everyone at Vyoma for this beautiful initiative. Hari Om, Ram Ram Ram. Ram 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 Bhagini, Dhanyavadaha. Now I request all the learners to please raise your hands. Srinivasan. Namaskaram. You are able to hear me? Hello? Yes, sir. Please speak. Yeah, it was a great course. It was beautifully done and well prepared. I would like to thank Acharya ji and also the others, Manoj ji and Deekshita ji, for facilitating the presentation. And it was great to see the presentation was the one thing good about it is it had both the Sanskrit and the English transliteration in every slide, and it was beautiful. And the Acharya ji also explains the benefits and the meaning quite often, even though, I mean, he said he couldn't do it many times, but he actually did for many slokas, and it was great. It will be nice to have another course where we can actually do similar to the other course. I'm also doing another course on Subhashitas where we do the Padachedam and also Vyakaranam and all that. It will be nice to do that in Ganesha sahasranama also in the future. And definitely the video and the audio presentation was excellent. And I think the course is organized nicely, especially from the point of view of we are able to download the audio separately, and we can listen to it, and I can practice for any length of time. All that needs is my own enthusiasm and time. So I would like to thank all of you for organizing this. Great. Dhanyawadaha. Dhanyavadaha, sir. Thank you so much. Anybody else who would want to speak, please raise your hands. How to see the video of the persons who are speaking? I will make them allow the videos. Ram Ram Ram. Anybody else who would want to speak, please raise your hand. All of you have been a part of this course for such a long time. I am sure you would have something to share.
we request you to please raise your hand and speak. Swaminathan sir, Hima ma'am. ಎಲ್ಲ ಗಮ್ ನೀರೇ அப்படின்னு இருக்கு. Okay, I think I will have to close now. Thank you all for being part of this. They can send their feedback through a video. If they have a video feedback, they can send your video. You can send your video feedback to support at Vyoma Labs WhatsApp number or the email. Also, you can, when the feedback mail comes, there tomorrow there will be a course end mail. Maybe on Monday it will come. At that time, you can still give your feedback through written in the text box that is there. Yes. सर्वेभ्यः धन्यवादः. राम राम. स्वस्ति मन्त्रम् उक्त्वा समापयतु महोदय. अवश्यं महोदय. प्रार्थनाश्लोकम् एकवारं वक्तव्यं वा आचार्यं? स्वस्तीन्द्रान् वक्तव्यं वा? उच्यताम्. मनोज महोदय. प्राणनमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम् आश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम् बीजापूरगदाधनुस्त्रिशिखयुक्चक्राब्जपाशोत्पलबृह्यग्र स्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे. स्वस्ति मन्त्रान् वक्तुं शक्यते भवति. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. राम राम राम. धन्यवाद.